welcome. My name is Vicky. With us today is a well-known knee replacement surgeon in Dubai who also runs a successful campaign, Let's Walk Again. Dr. Azam Badr Khan with us. Such a pleasure to speak to you, Dr. Azam, and thank you for being here. Thank you, Vicky. Thanks for having me here. It's my pleasure to be here. Dr. Azam, you always wanted to be a knee replacement surgeon? No, yaar. No. I didn't want to be a knee replacement surgeon. Basically, I wanted to be a Air Force pilot. Wow. तो वो कहानी थोड़ी सी ये है कि I have done my schooling from Air Force School, and that inspired me to be wanting to become a fighter pilot and to be in the sky all the time and to take care of my country. ऐसे तो नेवी है, आर्मी है, but मुझे आसमान से सुरक्षा करने का ख्वाहिश बहुत ज़्यादा था. But having said that, my father is an orthopedic surgeon. Okay. My grandfather was a doctor. Wow. So my sister is also a doctor. Nice. तो ये फिर वो family trend को, tradition को, legacy को I had to carry, being the eldest. And you've become one successful doctor as well. But ये जो आपको मिलता था, that force से आपको एक profession चुनने को दिया गया था या force किया गया था. Would you pass that on to your children ahead? नहीं. आज के ज़माने में तो I don't think that any parent should think about it. That's absolutely not done, and आज के बच्चे भी नहीं मानेंगे because and but then I would definitely say that if they want to become doctor by their own choice, then definitely it is one of the best profession. Correct. No more a noble profession or slightly diluted हो गया है, but as you know that it's just always still people respect you. Correct. By the name of doctor itself. It's a big I mean, we consider doctors, as good as gods. They are the ones who save our lives, and the profession that you've chosen, was forced onto you. You're on the right path, is what I feel right now, and you feel the same. Yes, definitely. I feel the same. I would like to thank God that I am in this profession, and I love this profession now, though in the beginning it was not. And there's a lot of things that you can do good to the people. Correct. Apart from your profession, this profession gives you a platform where you can be a very professional and successful in your surgeon or whatever specialty. But at the same time, you have the opportunity or platform, as I said, where you can really spread the awareness in the people and do the good kind of work which you want to do. Correct. They say that there are no free lunch in the world, but I think in your profession there is something very special because it comes from within that you want to do good for the society. जैसे आपके campaigns होते हैं free knee camps, and it's quite popular in the world as well. So if you could tell us a little bit about that. I mean to say, you're talking about my campaign called Let's Walk Again. As you gave the introduction, I would like to tell your viewers that yes, Let's Walk Again, the story starts 10 years back when in the middle of my career I felt that I have to pursue the knee. And that's when if you go through this Let's Walk Again, it itself means that I want people to be walking, never sitting. Right. And nowadays, if you see the data from the US or all around the world, it gives a picture where knee problems are increasing day by day. Every 5 years, the amount of knee replacement which is done in US is increasing from 20% to 50% to 100%. In the next 20 years, it is going to be double. So these kind of data are there. Well, I may not be accurately, but it is alarming. I, from this platform of Let's Walk Again, I want to spread the message that people should, the day you get to know that you have घुटने का problem hai, you have a knee problem, from that time itself, there are a lot of things that you can do yourself. Don't totally depend upon your doctor. Okay. Well, definitely you go to the doctor once they tell you that you are starting or early, आपके घुटने का arthritis start हो रहा है or whatever, whichever kind of this thing.
there are a lot of things that can be done potentially by you itself. Okay. So there it goes, this slogan of let's walk again, Okay. basically to spread the awareness Okay. among the people, among the I would not like The to term it patients, The one suffering from it, who have started suffering from the knee Correct. problem. उनके पास काफी पोटेंशियल है, उनको काउंसलिंग की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि क्या प्रॉब्लम है और आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं. राइट. तो ये आप कहाँ पे करते हैं ये कैंप्स? ये दुबई में होते हैं या इंडिया में भी होते हैं? I've been trying to do it globally and touch wood, ऊपर वाले भी मेरा साथ दे रहे हैं. Good. Up till now, it's well, इंडिया में तो मैं कर ही रहा हूँ. If you probably know, कश्मीर, लद्दाख, पेंगोंग लेक, लेह लद्दाख. Probably now, अभी every Indian has got to know where is Ladakh because of Pangong So Lake, and after that वो आमिर खान की जो मूवी है Three Idiots, उसके बाद तो अभी सबको पता है कि टूरिस्ट स्पॉट हो गया. एकदम बिल्कुल. तो that region is a very it is comes under high altitude. Correct. It is above 11,000 feet, and so that is a mountainous region. Okay. वहाँ पे I have been doing regularly. I have been going to that region for the last 30 years. It all started with adventure that Nice. I am a little bit into adventure. Yeah. Of, Trekking, biking, hiking. Yes, everything. And आप यकीन नहीं करोगे कि 3 दिन पहले मैं रसल खेमा में फ्लाइंग ज्वाइन कर रहा हूँ. Wow, so that childhood dream is actually yes, exactly. yes. तो मैं भी वही सोच रहा था कि ऊपर वाला जो है आपके करेक्ट, आपके ख्वाहिश जो है ना वो शाहरुख खान की कौन सी कि ओम शांति ओम, ओम शांति ओम का वो जो डायलॉग है, डायलॉग जो है Correct. आप दिल से चाहो तो ऊपर वाला भी आपको पूरी कायनात जुट जाती है उसे आपसे मिलाने के लिए. तो मुझे लगा कि यार मैं 50 साल का हो रहा हूँ, दाढ़ी सफेद हो गई तो अब तो शायद नहीं होगा ऐसा, बट Correct. चीजें हो रही है वैसी. करेक्ट. अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले स्काई डाइविंग में मैंने किया, वाओ, जो कि my friend who is brigadier in army, he is the youngest skydiver of India. वाओ. तो you can imagine his father was in Air Force, so उसकी वजह से वो he was doing all this biking and all this stunts and all that. In my school days, he used to have a tent. So I inspired. He is the one. Correct. There are two people who has inspired me into the other category of mine, Adventurous life. One is this friend of mine. क्या नाम है? शांतनु गोयल. He is the youngest skydiver of India. मैंने उसकी वजह से राफ्टिंग किया, स्काई डाइविंग किया. हम लोग बाइक से दिल्ली से बाइक उठा करके शिमला रातों रात पहुंच जाते थे, कैंप करते थे. वैसे 15 लोग एक बाइक पे नहीं, ऐसे स्टंट नहीं करते. ओके, बट या आई मीन एडवेंचरस लाइफ होना भी जरूरी है. एंड इट ऑफ कोर्स आपके जो डर है, फियर है, उसको काबू में लाने का एक जरिया है, राइट? ये बहुत बड़ा जरिया है, और डर फियर के साथ साथ आपकी डे टू डे लाइफ में उसका बहुत इम्पोर्टेंस है. जो सटल आपके इनर बूस्ट जो करता है, इट लेट्स यू फ्लाई आउट ऑफ योर बाउंड्री. अगर आपको लगता है कि ये मेरी बाउंड्री है, अंदर से अगर आपने ये सब चीज किया हुआ है, तो यू डोंट रियली लिमिट योरसेल्फ. आप खुद ही बताया मुझे कि आपने हाउ मेनी डॉक्टर्स हैव यू कम अक्रॉस who says that I go to Africa also, I go to India, I plan to go all around. Right. For whatever reason. Mostly Yeah. doctors treatment के लिए ही जाते हैं, सर्जरी करने के लिए जाते हैं, but मेरा थोड़ा सा हटके है. राइट, ताकि आप रिफ्रेश हो जाए, एनर्जाइज हो जाए वापस. या तो ये सारी चीजें आपको बहुत काफी इंस्पायरिंग है आपके एडवेंचरस ट्रिप्स. वी विल प्रॉब्ली हैव अनदर एपिसोड फॉर दैट, वन फुल कंप्लीटली डेडिकेटेड. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट नी रिप्लेसमेंट. किसको जरूरत पड़ती है? इज इट अ सर्टेन एज जिसके बाद ही आपको करानी पड़ती है? एंड नहीं, देखिए एज का आजकल का जो ट्रेंड है, आजकल के डेटाज हैं जो कि नी रिप्लेसमेंट काफी कम उम्र में होना शुरू हो रहा है. Knee replacement is done for a severe, deformed, painful arthritis of the knee. Okay. That is the main reason why any knee replacement is done. And the first most important relief what you get after knee replacement is the pain.
तो पेन के साथ फिर हम जब सर्जरी करते हैं तो डिफॉर्मिटीज वगैरह भी करेक्ट करते हैं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या कोई एज लिमिट है, नहीं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हम डीजनरेटिव या वियर एंड टियर आर्थराइटिस की बात करते हैं, पहले के टाइम में nobody would think before 60 और 55 के पहले कि मुझे आर्थराइटिस भी हो सकता है, वियर एंड टियर, क्योंकि वो एक्टिव लाइफस्टाइल था। बट अभी भी एक्टिव लाइफस्टाइल है, अभी भी हम काफी लोगों को जिम जाते हुए और जाते हैं, वर्कआउट एंड ऑल दैट, बट there is a little twist in that we do not really focus कि हमें करना क्या है। We are more focused कि ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं बट स्ट्रेंथनिंग नहीं कर रहे हैं मसल का। सो दो थिंग्स जो है ना वो चीज़ें की वजह से और 24/7 हम एक्टिव रहते हैं, भागते रहते हैं, तो उसके वजह से जो है टोल ऑन द नी इज मोर, and that is why we are seeing the numbers of replacement being done rising with a lower age group also. Correct. And what is the treatment, and who should go for it, and ये सारी चीजें हम जानेंगे। But on a lighter note, I think पहले के टाइम पे क्या होता था, स्कूल्स में हमें काफी नील डाउन कराते थे, तो काफी एक्सरसाइज हो जाती थी अननोइंगली। आजकल आई थिंक वो बच्चों को नील डाउन नहीं कराती है, नॉट इवन अलाउड टू डू दैट। एग्जैक्टली, मैं वही बोलने वाला था। अलाउड तो नहीं है, अलाउड नहीं है। आप तो चिल्ला भी नहीं सकते, आप तो चिल्ला भी नहीं सकते, आप तो छू भी नहीं सकते। पहले तो रपा रप रहता था, और मुझे अभी भी याद है कि सैडलिंग भी होता था। मेरे ख्याल से आपको भी कभी हुआ, काफी पड़ी है तमाचा। हम लोग शरीफ बच्चों में रहे होंगे। करेक्ट। तो yes, that lifestyle that we used to have, and वो difference काफी है, and have you noticed that? Lifestyle डेफिनेटली लाइफस्टाइल के साथ जो डाइट जो पहले के टाइम में होता था, दैट वाज वेरी गुड। वो obviously it used to take care of your full body nutritional part। और एक्सरसाइज पे मैं, जब हम इसकी बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि नी आर्थराइटिस जब से आपको पता चले, जब कभी भी आपको तकलीफ हुई हो और आप डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर हैज टोल्ड यू दैट it seems that आपका early arthritis start हो रहा है, set in हो रहा है, that is the time you have to think that there is I have to take the control of my knee in my hands। आजकल के टाइम क्या है कि आपने क्विक सॉल्यूशंस चाहिए, क्विक सॉल्यूशन चाहिए। आपने एक तो गूगल डॉक्टर बहुत फेमस हो गया है आजकल, आपने गूगल कर लिया, सब कुछ पता चल गया। और दूसरा राक्षस जो है ना, वो हमारे लिए एक तरह से अच्छा भी है और बुरा भी है, वो हमारा इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस ने तो बहुत अच्छी चीजें की हैं कि आपके फाइनेंशियल बर्डन कम हो गया है, बट देन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इज दैट जरूरत नहीं है फिर भी कर रहे हैं। और आप एक बार साइकी ऐसा है, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, बट आप भी रियलाइज करेंगे अगर आपके पास इंश्योरेंस है, आपको लगता है कि इंश्योरेंस है, आप डॉक्टर के चैम्बर में आप एंटर किए एंड माय जॉब इज डन। दरवाजे के बाद जॉब जो है वो डॉक्टर का है, मैंने आपको इंश्योरेंस दे दिया, आप बताइए मुझे क्या करना है और आप ठीक करो मुझे। आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं अवेयरनेस के, और या फिर कि आपको स्ट्रेंथनिंग करना है, वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते हैं, और थोड़ा सा उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, जो कि आजकल आप देख रहे हो कि डॉक्टर्स आर बिजी, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू काउंसिल द पेशेंट ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ self care, of taking control of that situation। Yes, exactly। वो फिर the nutritional supplement and treatment part पे वो ज़्यादा चले जाते हैं, और फिर this is how the story goes, और वो early के जगह पे फिर moderate हो जाता है arthritis, and when it gets out of hand, when there is nothing else we can do to control it or slow down, तो फिर no option but knee replacement। And how painful is it उसके बाद, उसके पहले जितना पेन होता है, and how easy it is to live that same life again, or is it कि आपको एक नया renewed life मिलना शुरू हो जाता है after renewed life? पिछले 20 साल या 30 साल से ये मिथ है एक, या दिमाग में एक फियर रहता है, वो अभी भी चला आ रहा है। इट्स वेरी कॉमन अक्रॉस द वर्ल्ड।
we knee surgeons are facing this or any joint replacement surgeon, उनको लगता है कि 2-3 फैक्टर्स हैं. उनको लगता है कि मेरा एक सबसे बड़ा फियर फैक्टर, उनको लगता है कि करवाया पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, अभी तो कम से कम चल रहे हैं, पता नहीं खराब हो गया तो फिर होगा नहीं. इट्स नॉट लाइक दैट. आई वुड लाइक टू से टू माय व्यूअर्स कि नी रिप्लेसमेंट इज अ वेरी एडवांस एंड टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट हुआ है, और इसमें द टेक्निक्स व्हिच हैव डेवलप्ड, इट मेक्स इट वेरी सिंपल. It sounds a very big surgery. एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा कि it's like आपके दांत में जो कैप लगता है, it's simple like that. I'm saying you open the knee of the patient and वो जो घिसा हुआ पार्ट है उसको आप एक मैं कहूँगा कि आप छील देते हो, वो खराब वाले पार्ट को थोड़ा सा काटना भी नहीं मैं बोलूँगा, छील देते हो और ऊपर नीचे का छील के उस पे कैप लगा देते हैं, जैसे दांत में कैप लगाते हैं, और बीच में प्लास्टिक डाल देते हैं. दैट्स इट. आई एम से तो वो एंड उसी टाइम पे वी डू द अलाइनमेंट आल्सो. तो ये दोनों चीजें एंड इट्स अ ट्रेमेंडस एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. और आपने जो पूछा कि उसका पेशेंट को पेन और उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है सर्जरी के बाद, इट इज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ चेंज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये सर्जरी को ही हम आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए. करेक्ट. अगेन मैं एग्जांपल थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ, आई होप यू चलेगा प्लीज. मैं अपने फादर का एग्जांपल देना चाहूँगा. माय फादर इज नाउ 85. 15 साल पहले उन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराया. Literally 15-20 साल तक he avoided accepting the fact that he has to go for the knee replacement. Okay. You know, एक saying है कि doctors are the worst patient. Doctors are the worst patient. Exactly. हमें ना कुछ होता है तो हमें A से लेके Z तक end तक पता है और वो दिमाग में आने लगता है कि यार इसका end point ये भी हो सकता है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे. तो उनका वही स्टोरी था कि लिटरली जब वो ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, ही वॉज ऑन द केन एंड व्हील चेयर पे आने वाले थे. दैट इज अ टाइम व्हेन ही डिसाइडेड कि ठीक है मैं करा लेता हूँ यार, अब तो नहीं हो रहा है मेरे से. एंड इट्स बीन 15 years एंड ही सेज दैट व्हाई डिड आई वेस्ट माय द प्रीवियस 15-20 साल. तो आई वुड से कि देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू डिसाइड बिटवीन योर प्रॉब्लम, is it enough solved, and should I let my life go like suffer that much? Knee replacement करने के बाद within 6 hours to 10-12 hours I make my patients stand, and not only stand, I make them walk also. तो definitely we try to use the walker. और अगर आपने अच्छा अपना मेंटेन किया हुआ है मसल पार्ट सर्जरी से पहले, तो मेरे तो कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं कि जो बिगर छड़ी के भी, बिगर सपोर्ट के भी उन्होंने फर्स्ट डे से ही चलना शुरू किया. क्या बात है. एंड देन यू नो वॉकिंग बैक ऑन योर फीट स्पेशली आफ्टर सर्जरी, तो एक मेंटल पावर की भी जरूरत होती है. वुड यू गिव सम क्रेडिट टू दैट एज वेल? मुझे तो लगता है कि दुनिया में हर चीज को अचीव करने के लिए और एक स्टेप लेने के लिए भी मेंटल पावर चाहिए. अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी है तो वो आप तो फिर अच्छे भले इंसान भी एक स्टेप लेने से am I right or not? I think I'm not relaying it in a proper way. मगर आज के किसी भी काम में mental strength is very important, and that is what coming back to Let's Walk Again, knee awareness camp, going around the globe is what I'm trying to promote. Right. Surgeries हमारे काफी डॉक्टर्स करते हैं, नी रिप्लेसमेंट सर्जन आपको सभी जगह मिलेंगे आज के टाइम में, और नी आर्थराइटिस को हैंडल करने के लिए. बट थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट यू हैव टू ऑडियंस और पेशेंट और पीपल, वंस यू नो दैट यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर नी, देयर इज लॉट that you can do yourself. I would say कि 50% it is you who can take care of your control of your knee. Correct. And it is 50% doctors we can help you in slowing down your progression. I must congratulate on your campaign as well. The awareness जो आप create कर रहे हैं और कैसे अपने आप पे ये situation control करें is fabulous what you're doing. If it is possible कि 3 quick tips or 2 tips or even 1 tip on how to take care of your knee, ताकि आपको आगे जाके ज्यादा दिक्कत ना हो. ये सबसे बड़ी चीज तो विटामिन डी डेफिशिएंसी.
आपको है? 90%। आपको मेरा चेहरा देख के डॉक्टर आजम बोल रहा है आपको तो है। इस रूम में या हम आपको तो डेफिनेटली 90% मुझे तो है। वेरी आयरनिकल स्टेटमेंट व्हिच आई एम सेइंग। Correct, yeah. यहाँ इतना ज्यादा धूप है फिर भी इस हमें कंट्री है, में, yeah. बट हम कहाँ धूप में जाते हैं क्या? Hmm. अगर जाते भी हैं तो क्या हमारा स्किन एक्सपोज होता है? सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप 5 मिनट ही 10 मिनट ही करें। अगर मैं नॉर्मली कहता हूँ कि अगर आप इफ यू वॉकिंग फॉर 45 मिनट्स, आप 40 मिनट्स वॉक करें, 5 मिनट आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे ध्यान दें, दैट विल सफिक्स। ये दो चीजें, सप्लीमेंट्स तो हम सब जानते हैं कि लेना ही पड़ेगा। विटामिन बी है और कोलेजन है। कोलेजन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इम्यूनिटी की दवाई तो हम वैसे ही कोविड के डर से ले ही रहे थे। अभी इम्यूनिटी का भी इतना ज्यादा हो गया है कि यस, एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इम्यूनिटी। डॉक्टर आजम, इट्स बीन अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। काफी कुछ एक्सटेंसिव बातें हमने की, लेकिन आई एम श्योर दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एडवेंचरस ट्रिप्स एज वेल। What is your plan now in terms of skydiving? आपने कर ली, and now you going to be a pilot as well. So Kilimanjaro. That's your goal. Mount Everest base camp. No, I've done that. You've done that. I've done Kilimanjaro. I've done Mount Everest base camp twice, and I would like to tell my audience that 1 month back I was on the Mount Everest base camp. We trekked with one of my patient who is an osteoarthritis patient Wow. for the last 15 years with a severe arthritis. Superb. So I've been also to Antarctica also, Beautiful. and the next stop would be Arctic. Whoa, Arctic North Circle, Pole. yeah. वो Amazing. तो देखते हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो वहाँ भी। Of course, आप करेंगे, and we wish you all the best for your future endeavors. It was a pleasure to speak to you, Dr. Azam. Thank you so much. Thank you.